हेलो तो आज आउ गोटे पॉलिटीर क्लास हम तो आम लास्ट क्लास सबू स्केड्यूल्स गुड़ाक कंप्लीट कर देथिलु तो आज हम पार्ट गुड़ाक ऊपर तो पार्ट गुड़ाक मन रखार बहुत ही सिंपल ये अच्छे यू कैन फ्लाई directly from US to UP to meet Sam and Ram. ये बंद आगे मुझे कह दूँचे तो U for union and territories, C for citizenship, D for you can fly रहे जो फंडामेंटल राइट्स, D रहेगा DPSP, 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज, F U रहे आमर आमर यूनियन लेवल रे लोकसभा एंड राज्यसभा ऊपर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा. 7 आम हटे देलु. 6 रे रहला गवर्नमेंट से स्टेट रे आसीगला एटा यूनियन एंड स्टेट लेवल. ओके सेटा यूएस, यू फॉर यूनियन, एस फॉर स्टेट. तापरे आमर अच्छी डील्स विथ 7 आम हटे देचु. एक्चुअली एटा पलैछि 7th अमेंडमेंट एक्ट रे आम हटे देचु, वाज डिलीटेड. 8 रे आसीगला यूनियन टेरिटरीज, यू आसीगला. पी रे आसजिव पंचायती राज 9 रे. 9A रे आसजिव म्युनिसिपालिटी, एम. तापर आसीगला सैम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके हाँ मैंने एटा भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B रे द इंपोर्टेंट नो दैट 10 आसीगला शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया. सैम रे आसीगला. आर रे आसीगला रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जोटा आसीगला 11 ऊपर. ओके 11 टा बहुत ही इंपोर्टेंट यूनियन और स्टेट ऊपर थाए. ओके तो 11 हो यूनियन और स्टेट. गोटे जो यूनियन को गोटे पड़े स्टेट को. सेमती आसला डील्स विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू. एटा रैम साम एंड रैम ये बंद सरला तापर केतेटा इंपोर्टेंट गुड़ा रखा कहीं सब गुड़ाक इंपोर्टेंट नुह. स्टार्टिंग रे 11टा बहुत इंपोर्टेंट. तापर आम देखिए कि फाइनेंशियल कमिशन जोटा अच्छी आर्टिकल 280 एटा 12 पार्ट होचे सेटा टिके तापर 15टा इंपोर्टेंट इलेक्शन 324 आर्टिकल. तापर केतेटा ट्रिब्यूनल्स 323A to 323B इंपोर्टेंट अच्छी. UPSC एंड पब्लिक सर्विस 312 आउ पार्ट है गला 14. से बड़ा पार्ट 18 रे हमर आसी जाए इमरजेंसीज एटा 18. पार्ट 17 रे आसी गला ऑफिशियल लैंग्वेज लिखाई छे ऑफिशियल लैंग्वेज हला ऑफिशियल लैंग्वेज. तापर शेड्यूल्ड ट्राइब 16 था हला शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये पार्ट 16. स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हटिଯାଇଛି हला. तापर पार्ट 20 रे गला अमेंडमेंट 368 आर्टिकल. अमेंडमेंट आमर नियाई कौटू साउथ अफ्रीका कन्स्टिट्यूशन रो पार्टा नियाई कहीं आम कन्स्टिट्यूशन एकला नुह कहीं आमको जो कहीदे 303 के 1934 कहीदे कि तुमको निज कन्स्टिट्यूशन बनाया पड़ो निज कंट्री को इंडिपेंडेंट स्टेटस देवाई से आम पाखे आउ कि रास्ता नाला. तो आमको बहुत ही जल्दी बनाया तो बहुत जल्दी बनवाई आम कौन कलु पूरा स्टार्टिंग रू तो बनई पारूँ. तो इंपोर्टेंट पार्ट गुड़ाक सब जगार नहीं कि आम बनईदेलु. ओके तापर आसला प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आम ए कॉन्स्टिट्यूशन भितर को डाइव इन करछु. तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रिएम्बल किसी नुह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जोटा जवाहरलाल नेहरू पास करते केवे 13 डिसेम्बर 1946 रे. तो बोरोड फ्रॉम USA
तार लांगुएजटा जो होचे सेटा होचे ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज है एटा बहुत इंपोर्टेंट मार्क करिया लैंग्वेज आमको समस्त मन अच्छी कि यूएस टू आम बर करचु बट लैंग्वेज कारी मन न था से लैंग्वेज रे समस्त फसी जाती ए 1976 रे 3टा वर्ड आड कराला जोटा होची सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो मन रखा थाए तो आम सब एमती लिखा SOV SOC ACC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कह कि कौ लाइन रे अच्छे से बताओ तो यहाँ मन रखा पड़ो कि प्रथम SOVC ACC गला यहाँ इम्पोर्टाट है इम्पोर्टाट मन रखा पड़ो तक गले वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved the constitution of India into sovereign social secular democratic republic. Okay, 26th day of November adopted. Adopt like dala adopt was in 1949 and enact and give to ourselves the constitution. एटा ही हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देदेला या भीतर आहरी जिन अच्छी जोड़ा गला जस्टिस 3टा प्रकार सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल लिबर्टी भी वर्ड यूज कराई किंतु ये कौटी भी फैटर्निटी यूज कराएनि सेटा सब पचार दिखती फैटर्निटी तल अच्छी फेडरलिज्म नहीं है फेडरल वर्ड यूज है समस्त कन्फ्यूज जाती फैटर्निटी सहित लिबर्टी अच्छी इक्वालिटी अच्छी फैटर्निटी अच्छी है बस ये आम जा प्रिएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल एटा मन रखा पड़ो जमती आमर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल कि आम ताको नहीं कि कोर्ट रे केस कर पारूँ से भाया प्रिएम्बल भी नॉन जस्टिस लाइक डीपीएसपी भी preamble cannot be override and specific provision of the constitution in case of any conflict between two the latter shall prevail so it has very limited role to play okay as observed by the supreme court has देखा कि preamble plays a vital role in removing the ambiguity surrounding the provision of the constitution एटा बहुत important part play करे बोली कि भी supreme court देखी the preamble declares the ideals and aspiration of the people that need to be achieved. That India is a secular state that doesn't mean that India is not religious or irreligious. Okay. कहीं ना सर्वधर्म संभव secular meaning टा बुझे दला. Okay. Basic feature of the theory in 1973 case of Bharati case versus state of Kerala. A Supreme Court held that preamble was a part of the constitution contained in basic structure. The preamble was not only very much a part of the constitution but was extreme importance thila co case of Bharati case important 1973 the Tiger Protection Act pass ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ tigress of India କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ case एक वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला अगेंस्ट हुए सब बड़े सब जिन गुड़ाक आम प्रिएम्बल को गोटे माने माने अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाव नहीं गलु अमेंडमेंट 368 ओनली इज इन द बोर्ड ऑफ द कंटिन्यूस प्रिएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन 1976 रे एडिट भी होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आम से किसी आड भी करदेलु बेसिक एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज कंटेन प्रिएम्बल आर टू बी अल्टर्ड बाय एनी अमेंडमेंट इन 368 in this case Supreme Court overruled the Bureau opinion in 1960 of its own Bureau opinion in that case preamble was not considered a part of constitution but tabare dam karala SR Bomai case in 1993 LIC India case Supreme Court again held that the preamble is an integral part of the constitution. Undivided part but integral part of the constitution. SM Bomai, Sir Bomai case, LIC India case, case of Bharati case. So what I want to
तापर बोरोड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जमती कहली कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु बहुत गुड़े जिनस आम नहीं गलु नियरली 75% बहुत गुड़े जगह 80% भी लिखाई तापर यूके रु जो जगार जो लोक मैंने आमको रूल करते तो बहुत गुड़े जिनस आम नबू जमती पीएम पोस्ट पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डायरकी सिस्टम नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर bicameral hierarchy lower house more powerful council of minister responsible to lower house okay lower house means lok sabha ko responsible speaker in lok sabha single citizenship preliminary privileges parliamentary privileges rule of law prerogative rights फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करने में रिट्स गुड़ा भी अच्छे हम पारे तापर आसगला यूएस टू आम नेलु रिटर्न कन्स्टिट्यूशन एमती नुह कि आम कहीदेलु जमी आम वीडी सावरकर सहित होता कि रिटर्न कन्स्टिट्यूशन एमती किसी ना रूल ऑफ लॉ अच्छी कि लॉ सामने समस्ते इक्वल सेटा यूके रा बट से माने न मानिकी ब्रिटेन रे माने कोर्ट रे पेश कले कहले कि आम इंडिया नहीं कि जीव इंडिया नहीं कि जाकि अंडमान निकोबर रे पकईदेले से यूएस रु आम कहलु रिटर्न कन्स्टिट्यूशन तो आम नबू कि सबकि रिटर्न रहा माने नो सेकेंड ओपिनियन तापर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट शुड बी प्रेसिडेंट एंड इट्स बीइंग सुप्रीम कमांडर द फोर्स प्रेसिडेंट आम नेलु कि प्रेसिडेंट जमती क्वीन अच्छी यूके आमर सेमती प्रेसिडेंट रहा से किसी प्रोब्लेम ना बट यूएस टू आम नेलु कि से ही आमर एग्जीक्यूटिव हेड से जहाँ कहीदेले से फाइनाल एमती किसी हो पारे कि से मना करम कह ना ना तो करा पड़े एग्जीक्यूटिव हेड भाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है ये मोस्टली सब जिन लोअर हाउस को लोअर हाउस मोर पावरफुल लोअर हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये करेंगे बाइकमेंट सिस्टम ये कला राज्यसभा उपर फंडामेंटल राइट्स भी आम यूएस टू नहीं सुप्रीम कोर्ट भी आम यूएस टू नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी जे कर प्रोविजन ऑफ द स्टेट्स किंतु यूएस रे कौन कि दीटा सिटीजनशिप स्टेट सिटीजनशिप भी अच्छे निजर भी सिटीजनशिप अच्छी दीटा सिटीजनशिप अच्छे आम से नहीं सिटीजनशिप यूके रो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू से सही सुप्रीम कोर्ट ऊपर को पड़ेगा तापर आइडिया ऑफ प्रिएम्बल तो आम नहीं लैंग्वेज कोर्ट नहीं गई ऑस्ट्रेलिया रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर भी जब यूएस दौचे तो बाहर भी सही कर यूएसएसआर आमको कौन चला फंडामेंटल ड्यूटीज 5 year प्लानिंग बहुत कम अच्छी मन रखा सहज हम ऑस्ट्रेलिया कनकरेंट लिस्ट है स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट आम पाखे थी कनकरेंट लिस्ट आड करदेला कौ ये जीव से हाँ स्केड्यूल मुझे कौन थी 2 years ऑफ ओल्ड पीएम एफ आसीगला कि यूनियन स्टेट आउ कनकरेंट है केते नंबर एटा 8 ऊपर 7 तापर आमर लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल ऑस्ट्रेलिया हम आगु कही प्रोविजन ऑफ द रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स ओके ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स ऑस्ट्रेलिया माइंड सेट जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस पार्लियामेंट्री दीटा हाउस रही ऑस्ट्रेलिया का लगी ना तीन सही कर फ्रॉम जापान लॉ ऑन व्हिच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन सुप्रीम कोर्ट देदेला आमको किए यूएस देदेला किंतु सुप्रीम कोर्ट केमती फंक्शन कर जापान देला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर बाय रूल ऑफ लॉ आम आनी यूके टू किंतु तार प्रोसेसटा कौन रहा से जापान देला तापर वीमार कन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी मोस्टली जापान उपर आमर आसी जाइए लॉ है जापान मन रखा पड़ो लॉ उपर बहुत जिनस आसब जर्मनी रू सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आउ गोटे जर्मनी रू किसी गोटे इंपोर्टाट जिनस मे बी एमसीक्यू मुझे कहीदेवी साउथ आफ्रिका रू अमेंडमेंट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एटा मोस्ट जगह पचरा हुए कि राज्यसभा आम देला किए यूएस देला बट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स साउथ आफ्रिका देला कनाडा स्कीम ऑफ द रिलेशन ऑफ द फेडरेशन स्ट्रॉन्ग विथ सेंटर फेडरेशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट प्लेसिंग रेसिड्यू पावर्स विथ द सेंटर
सेंटर को बेसी पावर देला आमर से ना आमर जोटा आमर फेडरल सिस्टम आमर होचे क्वासी फेडरल आमर भी स्टेट्स अच्छे आ यूनियन अच्छे किंतु आम यूनियन को बेसी पावर दो यूनियन हैज मोर पावर को क्वासी फेडरल सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर कनाडा देदेला कि गवर्नर को सेंटर ही करियो तो ये भी सही सेंटर स्टेट पावर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आयरलैंड आम कौन आसलु डीपीएसपी नेलु इरिश कॉन्स्टिट्यूशन तापर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मेथड ऑफ द इलेक्शन ओके एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम फ्रांस कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी ओके फ्रांस एगुड़ा दिए है तापर आसीगला आमर यूनियन एंड टेरिटरी तो आर्टिकल 1 माने मेन आर्टिकल पार्ट्स स्केड्यूल सब ये सब गुड़ाक देखा मिले तो से आसीगला कि फर्स्ट आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स ओके आर्टिकल 1 आउ किसी ना यूनियन ऑफ स्टेट्स ओके इंडिया दैट इज भारत एबे आमर जो नुआ कहुच कि इट शुड बी भारत दैट इज इंडिया लिखा देखिए अमेंडमेंट हो कि नहीं देखिए पर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट केवे इंडियन एक्ट 1947 पास कला टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान गेव तो प्रिंसली स्टेट के कहला कि तुम आइदर जॉइन इंडिया कर ना पाकिस्तान को जॉइन कर जमी जवाहरलाल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहले कि आम मुझे समस्त कथा है कि प्रिंसली स्टेट गुड़ा को निज भितर आड करदेवे है तो हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर रिफ्यूज टू जॉइन इंडिया 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया 549 राज्य है एटा राज्य है हैदराबाद पुलिस एक्शन रे जॉइन कराला जूनागढ़ को रेफरेंडम रे जॉइन कराला कश्मीर को 370 दे जॉइन कराला है यहाँ ही हूँ 370 किए करता हरि सिंह तांकर से किंग थिला कश्मीर तो से हैदराबाद को मारपीट करके जॉइन कर कहीं तुम मिडिल रहिंडिया कहे कि ना ना आम अलग कंट्री सहित जॉइन होगा चाहिए से तो पॉसिबल नुह ना by any means any political view that cannot be correct. In 1950 the constitution contained a fourfold classification part A, part B, part C, part D of the states. First linguistic basis of linguistic state Andhra Pradesh, linguistic state IP 1954 की 53 रही मन नहीं ठीक से तो आपको पड़े तो तुम कहीदेवी कि आगुरी कहीदे गोटे है पार्ट ए कंप्रोमाइज 9 अर्स्ट फाइल गवर्नेंस प्रोविजन्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफ इंडिया ओके पार्ट बी स्टेट्स कंसिडर 8 9 थिला 8 है प्रिंसली स्टेट विद इन लेजिस्लेटर कंसिडर द चीफ ऑफ द प्रिंसिपल Indian and some of the usual princely state. This part C state 10. The now 8-10 were certainly administered. Andaman Nicobar Island is kept as the solitary of the part D. 8 ही important. वह Andaman Nicobar एकलाच अगर आप बता दे को part of the state part D बुर अलगा ही करे ना हाथ में formation and alteration of the state article 2 किसी न्यू स्टेट ऐड करार अच्छे आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 रहा कि नेम चेंज करार अच्छे कि टेरिटरी चेंज करार अच्छे ताले सेटा आर्टिकल 3 आमर योगी आदित्यनाथ के सहित ऐड कर दो है है ना नेम्स ऑफ एनी स्टेट तो नेम बहुत से चेंज कर से प्रेसिडेंट दबो कौन कौन अच्छे देख दो है The procedure followed is the bill giving effect to all the changes to the state above can be introduced in either house. कौन से ऐसे introduce कर दे
of the parliament only on the recommendation of the president को recommendation है कौन से ऐसा कर दो so will affect the boundary before introducing parliament shall refer to the bill to the state legislator को भी पठाओ कि भाई तुम opinion दिया कि यहाँ पर तुम कौन भावुचा fixing the time limit which opinion may be accepted by the state legislature president may extend the time limit if the state legislature fails to express opinion within the stipulated time, it is deemed that it has expressed its view. If it submits its view within the period so specified extended, the parliament is not bound to accept the act, the views of the parliament is not bound. कि भाई आमे तुमको तो मागुच opinion ही मागुच. It is not your order or anything. It is your opinion. So हमको नहीं परिवो ना भी नहीं परिवो हला necessary to make the reference to the state legislature bill is proposed and accepted. Bill is passed with simple majority. ये टाइम कहूँ चाहते भाई एरा नेम चेंज करे या फिर बाउंड्री चेंज करे सिंपल मेजोरिटी ही पास हुआ. However, in this case, union territory, it is not necessary to obtain the view of the legislature. तापर आर्टिकल 4 आसीगला it declares the law made for the admission and establish of new state. तो ये कौन कहला कि are not to be considered as amendment of the constitution. Amendment नुहा एटा कौन सी स्टेट बाउंड्री या फिर नेम को चेंज करिबा इज नॉट ए अमेंडमेंट सेटा आर्टिकल 4 कहला. डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ द स्टेट include also power to cede Indian territory to the foreign country. Okay, से जो फॉरेन कंट्री अधा माड़ी बसुचंती कि ये कर दूचंती सेटा भी इरा हो. नाइन्थ constitutional amendment act 1970 was enacted transfer the state of the territory to Pakistan. जितने पाकिस्तान को 9th constitutional amendment act 1960 was enacted to transfer the state territory मतलब ऊपर वाला पार्ट POK. Okay, तापर reorganization of the states. इसके धर कमीशन 1948 रे इशू कला डिमांड फॉर द reorganization of the state on the linguistic basis. इसके धर मना कर देते तापर धर कमीशन recommend the reorganization of the state on the basis of administration हाँ linguistic factor administrative convenience रे करिया पे कहते कि तुमको जमती सुविधा हो शासन कर से कर किसी लोड नहीं. This create much resentment led to the appointment of the another linguistic provinces. Congress 1948 itself examined the whole question of this. It consisted Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Patabi Sitaramaya. Hence, it is called as JVP committee. It submitted its report in 1949 and formally rejected the language. Okay, पुनी तरह language को reject कराला. पुनी 1953 रे the government India forced to create first linguistic state Andhra Pradesh कह दिला 1953 आगुर कह दिले हला from Madras. ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡରଙ୍କର ମାନେ ସେ ଡେଥ୍ ପରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ହେଲା. ଏଇଟା ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେଇନଥିଲା. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଯିଏ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା. ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏଡ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଦର ରିଜନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍. ଓଭିୟସ୍ଲି ଜଣକର ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦରକାର. ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 3 ମେମ୍ବରର କମିଟି କରାହେଲା. ଫଜଲ ଅଲି ହେଲା ଟୁ ରି ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦ ହୋଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା. ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଏତେ ପଢ଼େ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆଜି ଯାଏଁ. ଇଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ 1955. ଇଟ୍ ବ୍ରୋଡଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ one language one state. It is not. Okay, one language one state is not, but language basis look arrive. Okay, that is okay, but one language one state is not going to happen. ସେଇଥିରେ ଏଇଟା କମିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଫଜଲ ଅଲି ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଡାର୍କ କରିଦେବା ହେଲା. ଫଜଲ ଅଲି
तापरे it identified 4 major factors that can be come into preservation and strengthening of the unity and security of the country. Linguistic and cultural homogeneity. Okay, and तुम्हारा रही भाई फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन. ओके, पैसा वाला इकोनॉमिकल जहाँ भी सेटा भी कंसिडर करावा. ओनली लैंग्वेज हो पारिबनी. ओके, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज होल. ओके, तुम स्टेट हिसाब से तुमको फायदा मिलूचे सेटा भी कंसिडर कराओ और पूरा नेशन भी कंसिडर कराओ. 16 states, 3 centrally administered territories starting रे हिगला किंतु एबे हम पाखरे केतेटा अछि हम पाखरे अछि एबे 28 states and 80 UTs union territories जोटा कि centrally administered. ସେଥିରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନୂଆ ଆଡ଼େ ହେଇଛି. ସେଟାକୁ କିଏ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ରୋଲ୍ ଅଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି. ଓକେ, न्यू स्टेट्स क्रिएशन एंड अल्टर. ओके, गुजरात एंड महाराष्ट्र बनाला. बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे को डिवाइड करागला 2 स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 रे. 1960 लिखा है सॉरी फोन था क्या होता है. केरला स्टेट 1956 रे. क्या सब आग तो लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्र प्रदेश अलग आईगला तापर केरला तापर कर्नाटका रहीगला 1973 रे. कर्नाटका भी पूराटा को मद्रास को देउथले हला. तो मद्रास आगे आंध्र अलग आईगला तापर केरला अलग आईगला तापर कर्नाटका भी अलग आईगला. अब मद्रास तमिलनाडु होईगला. ओके, फिर आसीगला नागालैंड. नागालैंड इज आउट फ्रॉम द आसाम. आसामटा बहुत बड़ा स्टेट थिला ताको अलग करागला 1962 रे. फिर हरियाणा भी पार्ट होता पंजाब रो. पंजाब को भी काटिकी हरियाणा को अलग कराला 1966 रे. हिमाचल प्रदेश भी बोधे पंजाब ही पड़ता मे भी. ओके, आगुरी यूनियन टेरिटरीज थिला. ओके, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थिला. स्टेट होगला 1970 रे. मेघालय सेटा भी बोधे आसाम रो ही हला. आसाम रो 1969 रे. मणिपुर एंड त्रिपुरा 1971 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काठू अलग ही गई थे. इन्हें आगुरी यूटीज थिले ताको कहदेला कि हाँ हम स्टेट दे दूच. टिके वेट करे पड़ो. ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ହେଲା. ସିଟିଜନସିପ୍ କାଲି କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା. ତ ସିକିମ୍ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍. ସେଇଟା ବି 36th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା. ମିଜୋରାମ ବି ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା. फिर अरुणाचल प्रदेश एटा तो फुल स्टेट स्टाटस मिल ना मिलला पर ना एटा गोटे स्टेट थिला. गोवा तो स्वाधीन है पर्तुगीज मैंने छाड़िले तापर जाई आम पाक आसला है. तापर छत्तीसगढ़ अलग होती मध्य प्रदेश रो छत्तीसगढ़ अलग हो 2000. ओके, मो बर्थ ईयर ही सब अलग. उत्तराखंड यूपी रू अलग होगा 2000. झारखंड भी 2000 अलग होगा बिहार. ओके, तेलंगाना 2014 रिसेंट मोस्ट रिसेंट आंध्र प्रदेश रू होगा. तो ये 3टा जाक 2000 रही. गोटे काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस लाइक झारखंड छत्तीसगढ़ एंड Uttarakhand. 2 of the states are neighboring states of Odisha and one is situated at the top of the north. Okay. तापर 1956 कौन आसीगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956. स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1976. ये 1955 रे गोटे आसी था कि कौन तो कहते कि किए सिटीजनशिप एक्ट भी आसाला से टाइम है. बट से नेक्स्ट क्लास रे. तो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट होता 1956 रे. कही ना पार्ट ए बी सी डी रे. ए रे रहीगला 9 विराट 10 के 8 9 17 27 आई रहीगला गोटे.
डी रे गोटे जीतला से किए अंडमान एंड निकोबार सेटा ही इंपोर्टेंट The names of the states and union territories. The first state to have new name is renamed Uttar Pradesh. ಸೌಡಾಗ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ರೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೌಡಾಗ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೇಗಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಜೊತೆ ಸಮಸ್ತ ಅಲ್ಗ ಹೇಗಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ लक्कादीप को लक्षद्वीप कराला 1992 रे दिल्ली को मिळाला दिल्ली तो इतला आई थिंक 69th अमेंडमेंट एक्ट रे इतला 1992 रे was considered the national capital territory 69th amendment act 2006 रे उत्तरांचल was renamed as उत्तराखंड ओके उत्तरांचल को आवतला केबे इतला उत्तराखंड 2000 रे in the same year Pondicherry known as Puducherry ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ପୁଦୁଚେରୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 2011ରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଅସ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ସେମିତି ଓରିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ବି କୁହାଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଆସିଗଲା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏତିକିରେ ଆମେ